listen to a testimony from Brother Christopher from Doha. Mentangin yo sngo gijing plashe msim jong I brother Christopher na po Doha. अब हम ब्रदर क्रिस्टोफर जो दोहा से आए हैं उनकी गवाही सुनेंगे. Praise the Lord. You're try. I'm not worthy to stand in the midst of the saints here. Ngamlong bu Vietnam bagan yang hakmat jeng kiriu ko. संतों के बीच में खड़ा होने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ. By compassion and merciful God, graciously, unexpectedly, He brought me in the midst of you all. Daga jingi snai ke jong play ula wan ra enga ya ga bagan dan hang ni hap deng jang phi. दयालु परमेश्वर मुझे आपके बीच में ले आया है. I was born and brought up graciously to a parents who were attending this mission. Daga jingi snai ke jong play la pen he pen san enga ha ga long ying ha ga bagi kmi ki pa ki de ki ba dan ha ga ni ke jingen. इस सभा में शामिल होने वाले माता पिता उस परिवार में मेरा जन्म हुआ. God has chosen me from my mother's womb. For that I thank God. Play ula jet yenga naga ke po ka jong I me kmi jonga naga banta ka ni nge ro I play. परमेश्वर मुझे माँ के गर्भ से चुन लिया, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ. When I was small infant, my parents went for a evangelical meeting and they were returning back. Ha bor bagadang khana ki kmi ki pa jonga ki ju le sikini ki jinga sengyalam bad adien ki le ke wan phai pan. जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप इस सुसमाचार के सभा में शामिल कर जब लौटते थे, The vehicle that they were traveling, it got stuck into a railway truck. But ka kali ka ba ki nya kala sakot na hap deng jong kita ki truck ki ba po ki surok. वे जो गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, वो गाड़ी जो है एक रेलवे पटरी पर फंस गया. So everyone started to evacuate the vehicle. But baro kita sedang ye kaban pelaj ye kata kali. सब लोग उस गाड़ी को धक्का मारने शुरू किए. My mother, she jumped from the vehicle and she wanted to take me from the vehicle, but she saw only the train coming and knocking the vehicle. But image nga ila mi na kata kali bila persang ye kaban say nga na kata kali hindi ila ipat bagat train kalawan persang ye kata kali. परंतु मेरे माँ जो है गाड़ी से कूद मारकर मुझे बचाने की कोशिश की, तब तक ट्रेन नजदीक आए. The train knocked the vehicle and took it for a distance, and no one in the vehicle got injured by God's grace. But adien ka train kalawan ba kala tungko ye kata kali but ke kali kala siat kham chingai na kata jaka ka baga la sakot. परमेश्वर के अनुग्रह से ट्रेन नजदीक आने पर भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे. The people who were there inside, they got small injury, but God protect me without a small injury even. Tiki preu baro ki badan na kata kali ki ladan ye ke jingman sao ki ba malum bala ndeu bleu le da ye nga klem dan kan ke jingman sao. उस गाड़ी में रहने वालों को थोड़ा चोट लगी, बल्कि परमेश्वर मुझे किसी चोट के बिना रखवाली किया. Once again, when my parents went from India to Sri Lanka, basai sian pan habai mei pa junga kilami na India habai ki lecha Sri Lanka. उसके बाद मेरे माँ बाप जो है इंडिया से श्रीलंका गए. They were traveling in the ship, and my father kept me in the ship and he went for immigration work. But kila haka jingle nangta kila le jingle daga jahan, but impa junga ilabu yenga hapa jaga jahan. तब मेरे पिता जो है किसी आवश्यक काम के लिए गए थे. When he came back and saw the place I was sleeping, that place was open. But hadin bilon pai na kata ka ila mi na shaban na ila mi shaban ila syam yenga ba ngam sim na dan ha kata jaka ya ka ba ila bu. जब देखे कि मैं सोने वाला जगह जो है वो खुला हुआ था. If I would have turned and slept, I would have fallen into the deep sea. Bala da jia banga yo thia kala ban long bangan hap che ka durya ka ba jilio. यदि मैं पहले से ऐसे गहरे समुद्र में मुझे गिरना था. My parents say I used to roll and sleep, but that day God sent His angel and He protected me. Bada dien bagi kemik pagi yang apa kita bad kila ngong nama buat ki angel ubleu lo pak ki angel ya kaban ya dah yang kata kapo. उस समय में मेरे माँ बाप नहीं थे, बल्कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजते हुए मुझे रखवाली की. Once again, when a child, I went with my father to a ship and I was returning back. But sian pat lej bayi pa aga por bangadang khana daga jahat bad habangila wan pai. एक बार मैं अपने पिता के साथ जहाज जाकर जब मैं लौट रहा था, In the deep sea, I had to get down from the ship, from the steps and get into the small boat. But nagata ka
jhat ngala hiar hagata ka durya ka bajilio da ka hiar se ka wei pat ka lieng ka khamret उस जहाज से एक छोटे नाव में जब हम उतरते थे, then while I was coming, because of the wind and the storms in the sea, the boat left away from the ship. bat hadian balon melawan nang ta namar kata ka jing jur janggal air hagata ka durya ba kata ka lieng kala le kham chingai na ka jan आंधी और तूफान के कारण वो नाव जो है वो जहाज से हट गया। I was falling to the deep sea there also. इस जगह पर भी मैं ऐसे गहराई समुद्र में गिरता था। ngala ngam se kata ka durya ka bajilio Then the person was in the ship boat, he put his hand and he just hold me. ba tau breu bana ta ka jhan la sim de ki ti bala yarab ya नाव में रहने वाला उस व्यक्ति ने मेरे हाथ को पकड़ के ठहर दिया। If I would have fallen, I would have not living be now. la da chia bangan jindala hap ka durya le singan nam dala im tan ko menta यदि उस गहराई समुद्र में मैं गिरने से अभी मैं जीवित नहीं रहूंगा। God has been protecting me in like this way many ways. baru bleu le ya dai nga hagani garu kom hagi babun ba ki jingjia इस प्रकार परमेश्वर मुझे अलग प्रकार से मुझे संभाला। Once I was want to go from one place to another place, sisian kat bangadang leit na gawe ke jaka se gawe ke jaka एक बार जब मैं एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था, now I get onto the bus and I came down. I don't know why. bat hadian bangala hia na bas bat ngam tip hadian nang ta मैं बस में यात्रा कर रहा था, क्यों मैं वापस आया मुझे पता नहीं था। When I went somewhere and came back, that bus left already. bat hadian ba ga lawan pai nang ta ba ka bus kala i no nga जब मैं उस जगह से वापस लौटा था, बस छूट गया। The second bus I get in and I went. bat nga yo ya ka bus ka ba ar bangala rong aga ka bus ba ar दूसरा बस लेकर मैं जब जा रहा था, On my way, I saw the bus I left. I get down. That bus was fallen down into the deep. bat ha sitting lenti ngala i ga ka bus ya ka ba la i no ya nga i ba kala no se ka banta ba shapo jang surong जब मैं रास्ते में था, पहले बस जो छूट गया था वो बस एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ दिख पड़ा। And when I was around 12 years old, bat ha kapor bangadang don ko makhat arsnem garta जब मैं 12 वर्ष का था, I was fell sick with called mumps. bat hadian hang ta ngala yo ya ga jing sitam ngala kempang ko bajur मैं मम्स बीमार से पीड़ित था। I was the sickness became so severe. bat kata ka jing pang kala long ka bajur kata kata वो बीमार बहुत ही भयानक हो गया था। Then my mother was sitting beside me and praying for me. bat i mei jonga i shonga sanda jonga be duai ne banta jonga मेरी माँ जो है मेरे नजदीक बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। I saw a dark person and a lightning person. They were fighting between each other. bat ngai i hang ta eu to breu badap de ka jing dom o breu badan ne ka jing shai ki khon ba ki sho apdeng jongki एक अंधेरा व्यक्ति और जो है उजाला व्यक्ति दोनों अपने आपस में लड़ते हुए मैं देखा। Then suddenly I waked up. bat hadian nang ta ngala kendit अचानक मैं उठ गया। I asked mother. She was crying and praying. bat nga kali me bat i la yam bat la duai मैं पूछी मैं अपने माँ से क्यों रो के प्रार्थना कर रही And है। I asked what happened. bat ngala kali i ka e ka bajia मैं पूछा क्या हो गया। She said, you are almost dying. bat i ong pila jan ya ka ban sayam वो बोली कि तुम मरने के हालत पे थे। God gave you life again, she said. bat bleu la ai biang ya ka jing em वो तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें नया जीवन दिया करके वो बोली। This all was happened in my small age. bat kini baro ki jia de kita ki arta ki bangadang khamre इन सारे बातों मेरे छोटे उम्र में हुई थी। When I was growing up, I thought I have seen lot of people coming and testifying about their salvation and their miracle which has happened in their life. Then I thought, why God is not dealing with me? I am not getting any experience in my life. mara bangala he la san ngala i ki babon ki breu ki mi sha khma de ka banai ka jing phla se pangi de ki kamba kam phla ki bajia ka jing em jong ki bangala par khat hala de balai bo blai sham la ye de bat nga ka bakum gani ka bantar जब मैं छोटे उम्र में था, लोग आके अपने उद्धार के बारे में और परमेश्वर से प्राप्त किए चंगाई के बारे में जब गवाही देते थे, मैं सोचता था परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार का अचंभित काम नहीं किए। One day, a person who was working in Saudi Arabia, he came and testified, and he said he has to travel for 100 kilometers to work for his job.
But she seen way real was Saudi Arabia, Layang Yakaban Ijing Fly on Yakaba. You have Yakabani Island Tika, she's 5 kilometers, Mankas gave in nature getting trade. एक बार एक व्यक्ति जो है सऊदी अरेबिया से आए थे, वे इस प्रकार गवाही दिए कि उनको उनके काम के लिए लगभग 100 किलोमीटर का यात्रा करना था. And one day he forgot to take his meals. But he let Bandra like a chunk of mom. एक बार वो है खाना लेने के लिए भूल गया था. He cannot go back 100 kilometers back to have his meal, so he was very tired. He thought of going and resting in his car. But hadir nanti ileklat imsem lala asyik kaba yakaban leci pai piang baila perkat yakaba insyong ban penjatai la dia pokali. 100 किलोमीटर वापस जाकर खाना लेना था असंभव था, इसलिए वो बहुत ही थक गया था, अपने गाड़ी में जाकर आराम कर रहा था. But when he came back, he saw a packet of food with hot meal there. But hadirin beluan pai le i bagata yak ilai syam yakata jingbam. जब वो लौट कर आया तो वो देखा कि गरम गरम खाना वहाँ तैयार था. Then I thought in my heart, if God can do miracle for these people, why can't God do something in my life also, so that I can have experience with my God? Barangala perkat la dau bleu la ban le kani kam ka bakrau ka jingim ka jangki bale bleu chim la ban le ka jingim jongar ya ka bangar ngala ban yo ya ka banai ka jingpla. तब मैंने सोचा इन सबके जीवन में परमेश्वर ऐसे काम करने से मेरे जीवन में क्यों ना करे, ताकि मैं वो परमेश्वर को अच्छी रीति से अनुभव कर सकें. I was expecting a packet of money. God can give me like that. He can do miracle in my life. उनके जीवन में परमेश्वर ऐसे अचंभित काम करने से मेरे जीवन में क्यों ना करे करके मैं सोच रहा था. But God's plan is not that. परंतु वो परमेश्वर की योजना नहीं थी. I went to Bombay with one of my friends. I went back to Sri Lanka. मैं मुंबई गया, उसके बाद मेरे दोस्त के साथ श्रीलंका लौट गया. On my way, we had some water, so that it became sickness in our life, both of us. वहाँ मेरे जीवन में कुछ प्रकार के बीमार आई. Actually, I was dying in that. My sickness became so severe, and I was dying. But मेरा बीमार इतना गंभीर हो गया, मैं मरने की हालत पर था. I couldn't eat for 10 days, more than 10 days, and drink even water. I cannot have even a water, even I can spoon of water also I cannot have it. 10 दिन तक मैं खाना भी नहीं खाया और पानी भी पी नहीं सका. So everyone was starting to come in to see me, thinking I will die. मैं मर चुका करके लोग मुझे मिलने के लिए आए थे. I confess all my sin to God, and I also waiting for the die. But ngala plai ki pop ki jonga baro hoble but ngala up but kamilanti ye ka bangan sayam. मैं भी अपने सारे पापों को कबूल करते हुए मरने के इंतजार में था. That day one pastor came to see me. उस समय एक पास्टर मुझे मिलने के लिए आए थे. My mother told to take me to the faith home. मेरी माँ मुझे फेतुम ले जाने के लिए बोली थी. The pastor said, the God who is living God is who is living in the faith home is living here also. फेतुम में जो परमेश्वर जिंदा है वो परमेश्वर यहीं पर भी जीवित है. And he asked me, do you believe in God? उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रखते हो? I asked pastor to surrender my soul, spirit and body to God so that I can die in God. मैं परमेश्वर में मरने के लिए मेरा आत्मा प्राण शरीर को सौंपने के लिए कहा गया था. He said, the God is living God, he will heal you today. उन्होंने कहा परमेश्वर जीवित है, वो तुम्हें आज चंगाई करेगा. He prayed for me. उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है. And he took some drink and he asked me to tell blood of Jesus. Eat sip, you tell blood of Jesus and drink that. उन्होंने कुछ पानी दिया, उसे यीशु के लहू बोलकर पीने के लिए कहा था. I tell blood of Jesus and started drinking that.
Bar ngala ong ba kadong kasnam ka jong Jisu ba ngasdang e ka bandi e ka. यीशु के लहू बोलते हुए उसे मैं पीने के लिए शुरू किया। When I drank that, my sickness flee away from me. Bar ha bangala di e ka ta ka ka jing pang kala mi no na ka met ka jong. जब मैं उसे पिया तो मेरा बीमार मुझसे हट गई। More than 10 days I couldn't have even water. Next day I had a bowl of rice even to have food. Lakum ba si pau singi ngam siam la e ka ban bam bat bandi e ka ndai ka ka singi ngala la bandi bat ban bam e ka bam. 10 दिन तक मैं खाना खा नहीं खा सका था, बल्कि उसके अगले दिन मैं अच्छे से खाना खा I सका। was able to experience the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus and the living blood of Jesus that can deliver from my sin and sickness also. Bar ngala mat e ka ta ka bor jong kasnam ka jong Jisu ka ta ka jabangit ka snam ka jong Jisu kalong ka bala ban pelaj e ka jingim ka jong bat e ka na ka jing pang ka jong. परमेश्वर के लहू में सामर्थ है, वो सामर्थ जो है हमें पाप से छुटकारा देता है और लोगों से भी चंगाई करता है करके मैं अनुभव कर सका। Dear children of God, who anyone is sick here also, there is power in the blood of Jesus who heal me. I can say boldly, He can heal you also today. Kugi kun ke jong blai ki ba e la da pi don ki ba pang ki ba stam ka ni ka por ka ta ka ju ka snam ka jong Jisu ka bala pen khia e nga ka la ro ban pen khia e phi he ka ni ka si. इस जगह में जो कोई बीमार हो, पर यीशु के लहू से मैं भी चंगाई प्राप्त किया, आपको भी वो चंगाई कर सकेगा। I thank God for all the wondrous things God has done in my life. Ngai ngu yu blai na ma kita ki ba phla ki ba blai la le ka jing im ka jong a. परमेश्वर मेरे जीवन में किए हुए सारे अचंभित कामों के लिए परमेश्वर की तारीफ करता Please हूँ। pray for me and my family so that we also may be caught up when Jesus comes in glory. Bar sungo ba ba duai na ban ta jong a ba ga yeng ka sem jong a khna bang yang a ro an la ban siam ka jing wan ka jong. जब यीशु महिमा में प्रकट होगा, उसे मिलने के लिए मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। Praise the Lord. Ye ro try.